Hello, welcome student to the session number 3 of Adobe Illustrator CS2. In this session we are going to cover these topics that are locking layers, group and object, then deleting layers, then grouping of the object and working upon them. Now what we have from the start is, first of all we have to look about how we lock the layer group and the object. सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट को लॉक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द object with the selection tool, then click object, then under the object menu, then click on the lock option. Now notice how Illustrator restrict the object from being altered in any way. अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते because it has been locked by the Adobe Illustrator. उसको अनलॉक करने के लिए to unlock the object or objects, choose object and then unlock. So आप देख सकते हैं इसमें in this you can see group the object menu option पे जाके under this object menu then you will group this, then have a look on notes on how to lock the things. सबसे पहले sometimes you may have an object placed exactly where you want it and you want to avoid moving it by accident. For example, if you have a large image or a graphic as a background for the page and you just want to have with this is the appearance with the pink, yellow and the blue. Now you want to lock this area, so you can easily lock this area so that आप गलती से भी आप उसको इधर उधर ना लेके जा सकें. So for this purpose we use the locking of the layers of the object under the option of layer. Now this is how we work on locking of the object and then moving the object without intimation, and we will not be able to move the objects because they are being locked in by the Adobe Illustrator interface. Now first of all let's have a look on this कि हम इसको create कैसे करेंगे. First of all ओपन द विंडो फॉर द एडोबी इलस्ट्रेटर, जो कि आपकी ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी. देन क्लिक ऑन द न्यू फाइल टैब टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट फॉर द लेयर टाइप एंड देन क्लिक सिलेक्शन एज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द लेयर you want to create. For instance, we are taking the example of 2 layers to be included in this example. First of all, step 1 is to open the Adobe Illustrator, then have some drawing and graphics on this frame. Then it will be displayed like this, having a different layers. You can create lots of layers by using this layer option, and then you have the things in your front of you. First of all, let's take the example of these things, and also we have a look about the keyboard shortcut. What we have keyboard shortcuts for the type select tool, T; to show or hide character panel, command plus T; and to show or hide open type panel, then alt plus shift plus command plus T. Then show or hiding a paragraph panel, alt plus command plus T. Then show or hiding the tabs panel, press shift plus command plus T. Then create outlines by pressing shift plus command plus O. And then again to show or hide the characters, use alt plus command plus I. Now you can see that there is a text written inside this. By clicking on the area type tool, click on the close part to create an area type object which constrains text within that path. मतलब हम कोई भी टेक्स्ट को अगर लिखना चाहते हैं और हम चाहते हैं इसको किसी शेप में कन्वर्ट करना, या फिर हम चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही ये उसको लिखे, तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल बाय द यूज़ ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर. ये सारा काम करने के बाद मैं चाहूँगा कि आप कुछ अपनी तरफ से भी एक्सरसाइज करें. दैट इज़ क्रिएट ए लेयर आर्ट वर्क फॉर स्कूल. अपनी मर्जी से आप बना सकते हैं. देन क्रिएट ए मर्ज कॉपी ऑफ द 2 images सेपरेटेड बाय डिफरेंट लोकेशंस. So first of all, let's have a look on how we work on locking the layers that we have already in this session. Then what we are going to is to have discuss or on that topic. So first of all, let's lock the objects in the manner. First of all, let's have some objects. I'm going to create this
as a object, then I'm going to create this as an object. Like as you can see, there lots of layers have been there. Layer 5 is having a path of the this path is this, and this is the layer. Now I just want to select the layer particularly I want to work upon is this layer 5 पे मैं गया और मैं इसको थोड़ा कलर दूसरा दे दिया ताकि we'll have some different kind of appearance as for this. Now to select, just go to the selection and then object and then lock. Then if you try to move this, you will not be able to move it. Okay, hence you can move this, you can move easily this from here to there, but you will not be able to move this because it is being locked. In the same way, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको भी लॉक कर दूं, तो then select the object, then click on object menu and then click lock. Again it is being locked. और अब मैं कोई एक आर्ट वर्क बनाने जा रहा हूँ. First of all, I have to take an example. I just want to create a one more circle that's having this gradient. Then I will create the gradient inside this. The gradient will of which type, that I have to select as well. There is a brushes and I will select. I will going to create the brushes over here, and I have no artwork selected as, so that's the basic thing that I am not able to draw it. First of all, I just have to select the area by which I will be able to, like मैं gradient करना चाहता हूँ या मैं color करना चाहूँ. Gradient में अभी ये color अपना change करेगा, आप देख सकते हैं. You will be able to create the, okay, this is how you create the gradient. And if you want to do this, then you can clip all these things to make it more interactive. आप इससे कर सकते हैं. सेलेक्ट टूल पे मैंने क्लिक किया एंड आई एम एबल टू गोइंग इट एनीवेयर. अब मान लीजिए गलती से मैं इस पर क्लिक करके इसको इधर उधर लेके चला जाए और पता लगे सारा आर्टवर्क जो है ख़राब हो गया, तो बाय यूजिंग दिस लॉकिंग टेक्निक यू कैन ईजिली अनलॉक दीज थिंग्स. आल्सो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन आउट देयर. दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी लॉक द ऑब्जेक्ट्स, एंड टू अनलॉक द ऑब्जेक्ट जस्ट click on the object, then object, and then unlock all will unlock all the things. For example, I'm working on this object and then I'm working on this object, and it will be able to lock anywhere as well. तो ये lock से unlock हो गया है. Okay, now by having some brush pattern also we can use, you can see that this is the brush pattern that having a color. If I will be able to use gradient, then I can easily use the gradient. इस gradient को ठीक करने के लिए या नॉट ठीक करने के लिए इसको थोड़ा हम कलर चेंज करना चाहते हैं, विल बी एबल टू डू दैट एज वेल, बिकॉज इसमें हमें जस्ट कलर सेलेक्ट करना होगा, देन ओके, एंड द सेकंड कलर विल ऑल एज सेलेक्टेड, सो इट कैन बी आल्सो depicted into the figure, and you can see that difference is out here. Now then comes the point that I want to group all these objects. Then I am going to select all them by the use of selection tool, that is by pressing V. Also we can use this tool to make it separate from the different procedure. So okay, now object पे क्लिक किया हमने, then group पे क्लिक किया. Now this is completely group. कंट्रोल जी से भी हम ग्रुप कर सकते हैं. अब मैं माउस को लेके कर कहीं लेके जाता हूँ तो these all आप जो देख सकते हैं इधर उधर ये आ रहे हैं. Okay, now also you are ready to use this tool with this kind of capability. Now you can see that the paths are still there. If I want to change them, then what I have to do is to click and hold the area, then I'm going to click on this, and then individually I can change them all. तो इसके लिए हम इसको लॉक और अनलॉक करके इसको चेंज कर सकते हैं. Then this is the way how we do work with the locking and unlocking of the object. अब जैसे मैं इसे अनग्रुप करूँगा तो ये इससे ग्रुप से बाहर भी आ जाएगा. अभी आपने देखा ध्यान से कि जो हमने अप्लाई किया था, ये अप्लाई किया हुआ बेसिकली क्या हुआ, जो है अलग हो गया उससे, जस्ट बिकॉज द पैटर्न जो हमने यूज़ किया. तो अब इस तरीके से अगर हम बात करें तो दीज ऑल थिंग्स आर बीइंग विजिबल, बट व्हेन आई गोइंग टू सेलेक्ट द डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, देन आई एम एबल टू मूव द थिंग्स दैट आर बीइंग ग्रुप्ड हेयर एंड आल्सो दे आर बीइंग लॉक्ड. तो मैं इस तरीके से उनको यूज़ कर सकता हूँ.
Now this is the way how I use the things in Adobe Illustrator. Now let's have some another artwork. न्यू फाइल मैंने क्रिएट की. नाउ बात आती है मैंने एक नई लेयर बनाई. अब इस लेयर पे मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया. इस सर्कल के अंदर मैंने थोड़ा ब्रशेस के थ्रू अप्लाई कर दिया, या फिर मैं ग्रेडियंट चाहता हूँ तो मैंने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया. देन आई विल बी एबल टू यूज दीज आर द ब्रशेस दैट आई कैन यूज द ब्रशेस विद. ओके, नाउ क्रिएटेड इनटू वन लेयर. नाउ आई एम क्रिएटिंग ए न्यू लेयर. इसको मैंने हटा दिया तो ये जो है लेयर विजिबल नहीं है. अब मैं चाहता हूँ, मैंने कोई सिलेक्शन टूल इसी को लिया, सेलेक्ट किया इसे रेक्टेंगल टूल से. देन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैश टूल को सेलेक्ट किया. आई एम एबल टू मैश इट. मैश का मतलब क्या होता है, ऐड करना एक सेल को इसके अंदर. देन इंटरेक्टिविटी कैन आल्सो बी डन हेयर. मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ये, और एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, और एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे. इसको मैंने कलर कर दिया किससे, इससे, बाय हैविंग द पैटर्न द ग्रेडियंट. फिर मैं बात करूँ, देन आई हैव द पैटर्न लाइक. स्विचेस की बात करूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं. स्टाइल्स की बात करूँ तो भी काफ़ी सारे हैं मेरे पास. अब मैंने एक और जो है रेक्टेंगल बनाया यहाँ पर, जिसका कलर मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, और इसको मैंने सेलेक्ट किया. देन आई एम रेडी टू यूज़ दिस. अब मैं इन दोनों को इंटरेक्टिवली ब्लेंड करना चाहता हूँ, मिक्सअप करना चाहता हूँ. देन जस्ट टू हैव द सिलेक्शन ऑफ द सेंटर एंड ड्रैग इट टू द सिलेक्शन ऑफ द अदर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेलेक्ट कीजिए इसे. ओके, देन सेलेक्ट द ब्लेंड टूल. देन यू आर रेडी टू ब्लेंड ऑन दिस. मैं सारा डिलीट करके दोबारा एक बना रहा हूँ. एक मैंने सर्कल बनाया, आई कैन सी दैट. ऑल्सो आई हैव सेकेंड वन ऑल्सो एज वेल. इसको मैंने क्लिक किया, देन इट इज़ लाइक दिस. दूसरा मैंने बनाया. देन आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इट. देन आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ब्लेंड टूल. इट इज़ बीइंग सेलेक्टेड फ्रॉम द सेंटर. ओरिएंटेशन यू वांट टू मेक इट ओरिएंटेशन स्मूथ कलर या कैसा चाहते हैं आप. स्पेसिफाइड शेप, ब्लेंड ऑप्शन, ओके आपने कर दिया. नाउ दीज जो आपने बनाया, इसको आपने एक बहुत अच्छी फॉर्म दे दी जस्ट बाय ब्लेंडिंग इट. दिस इज हाउ वी वर्क विद द ब्लेंडिंग ऑप्शन इन Adobe Illustrator. Okay, now what we can see is this layer to be visible or not. That's depend upon you. If I want to make it object को मैंने लॉक किया, then locking you can be seen here. अब मैं सोचा कितना भी कर लूँ, लेकिन मैं एबल नहीं होऊंगा इसको काम करने के. This is how we work on this blend tool. Now we can have more lots of option. We have actions also. मैं अपने Adobe Illustrator के अंदर मैं एक्शंस बना सकता हूँ. एक्शन का यूज़ क्या होगा, जो भी सीक्वेंस ऑफ टास्क मैंने किया है उसको मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ. देन आई कैन अप्लाई इट टू अनदर path of object. Then I can easily apply those steps with that file of recording. So this is how we work with this. Okay, now locking के लिए हम देख चुके हैं. This is how these are some layers which we are working on. जितनी ज़्यादा layers होंगी उसके हिसाब से हमारा ये काम होता चला जाएगा. Okay, thank you very much for joining this session. Have a nice day. See you in the next class. Thank you very much.